अच्छा सब जाइए देखिथिल से लास्ट क्लास रे बहुत जन एंड बेले पळेइल तो मु टिके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आरंभ कर देइथिली देखिथिल जाइए वीडियो कार किसी प्रॉब्लम अछि कि कूलम्स लॉ रे हेलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर किसी देखिल ना नहीं संतोष संतोष यस सर सर वॉइस कौन टे कट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वॉइस कटि जाउची हां सर मझरे मझरे कटि जाउछ टिके रुह टिके रुह हां टिके मु इंटरनेट टा सेट कर स्टार्ट करबा हेलो हेलो एबे सुबुची हेलो
Yes, sir. शुभुजी सर कटुची की वॉइस की हाँ सर टिके कटि जाउछ मझे एबे ठीक कौन करियो आज नहीं एक्चुअली करेंट नहीं देखो टिके जति प्रॉब्लम हो ओके सर स्टार्ट करिवा अच्छा इलो पढैतिली जाय कि देखिलो कुलम्स लॉ रे बुझी पारलो यस सर आज की नुआ को अछि हेलो ओके तो जदी हां आदित्य आज नुआ जॉइन यस सर ओके हमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जहां भी न पूरे वीडियो शेयर करथिली काली आ पठै देबी ଆଉ देखो जाई ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ରିପ୍ଲାଇନି ଆଜି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ବି ମୁଁ ऑलरेडी କହି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ଓକେ ओके सो लेट्स स्टार्ट देख स्क्रीन खाउची यस सर ओके ओके निजर ओके सो स्टैटिक फोर्स रो फॉर्मूला k q1 by r square where k stands 1 by 4 pi epsilon 0 4 pi epsilon 0 value कौन कहतिली 9 into 10 to the power 9 direct okay shortcut q1 q2 by r square r is 2 point charges and that is also equal to q into electric field okay and both are vector quantity electrostatic force and electric field both are vector quantity again electric field रा कोन फार्मूला k q by r square okay गोटे q एथे कटि जीवो तार चारि पाखरे जो तार चारि पटे जो फील्ड तार जो रेंज अछि जो रेंज भितरे आसिले आ गोटे चार्ज फोर्स चार्ज ऊपर फोर्स पड़े so that is electric field and electric field again k q by r square can by delta potential by electrostatic potential differential of electrostatic potential and distance and del v by delta x और ताको एमती भी लिखि परिबा जेमती f equal to q e लिखिले so e equal to f by q भी लिखि परिबा ओके so different forms of representation and static scalar quantities that is k q potential energy is equal to 0 by r or equal to q0 into v where v is the electrostatic potential and potential energy can also be represented as negative work done or eta minus w लिखले eta delta u positive ହେଇଯିବ एका कथा so that can be again written as q0 delta v or q0 v final minus v initial that is the change in potential okay and potential formula kono v equal to kq by r okay so this is the formula for electrostatic potential एठी देखो kq q0 by r हितला potential energy रे जेमति एठी फोर्स रे q1 q2 by r square थिला एठी सेमति दुईटी चार्ज रहइबो but potential रे kq by r is and these quantities are scalar quantities okay so एटा गोटे important point and electrostatic potential is equal to negative integral of E dot ds that can be represented like this also okay so मु जो कहितली पूर्वरु electric lines of force विषय कहितली and electric lines of force for a positive charge for a positive this positive charge is always away
from the charge habo. Okay, and electrostatic lines of force for a negative charge is always directed towards the negative charge. Okay, so it have a important point thila, and amaro jetale lines of force are curved when two or more charges come near each other. Okay, एवढा सब already देखैछि. And conservation of charge गोटे जिंस कह. Hello, audio mute करा. Okay, so conservation of charge गोटे कहि नथली गोटे important point. Quantization of charge हमें पढ़िछे, किंतु conservation of charge हमें पढ़ने. That is, charge can neither be created nor be destroyed. The audio mute करो समस्तंकर. Hello, कार एटा audio. आदित्य तमरो ऑडियो म्यूट करो बापा. आदित्य, mute your audio. सर म्यूट करछि सर Mute अनम्यूट कर दू तोर voice. लेक्चर Okay, so charges can neither be created nor be destroyed, but that can be transferred from one body to another. Arey, again somebody is creating noise. Okay, so anyway, अरे पुणी कौन अरे ऑडियो डा म्यूट करो. सेट तमरो ऑप्शंस आस्तबो ऑडियो म्यूट करो. So conservation of charge is charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another. हम जेमती गोटे suppose हमें जो experiment गोटे करथिले जे हमें अरे यार this is really disgusting. ऑडियो म्यूट करिया पई कहूची से करि पाबनी. अरे कहार एटा साउंड आछी रे. Okay, so what is conservation of charge? Charge can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another. हम जेमती एक्सपेरिमेंट जानिछे गोटे हम पिला बेले करू जे गोटे पेन किंबा गोटे स्केल को नै कि हमें हमर मुंडरे घसिले हेयर चुटी रे घसिले एंड किछिटा पीसेस ऑफ पेपर को हमें ता पाखा पाखी आनले that get attracted towards the pieces of paper get attracted towards each other. That means what happens, हम जेते गोटे सिस्टम को हमें रब करू, so सेतरे किछि गोटे पॉजिटिव चार्ज किमा नेगेटिव चार्ज सरफेस ऊपर डेवलप हुए. So that doesn't mean that new charges are created, but if you look after the total number of charge, the total number of charge on the scale is remains same. Total number of positive charge and negative charge on the scale remains same. Okay, but it just get transferred from one body to another. Similarly, in nuclear reactions, jemti ki amara alpha decay, beta decay हुए, in that case also you can find out that the charges in the left hand side LHS is always equal to RHS. Okay, right hand side any equation tame dekho, physical equation, chemical equation jaha bhi, okay, the charges are always conserved. Okay, so similarly the net electric charge of an isolated system is always conserved. This is also one statement of the conservation of charge. And the net charge before and after a reaction is always same. Okay, and again we can add charge into the quantities that satisfy conservation law. It would be important point.
कौन कौन quantities conservation law satisfy करंती, that is mass, linear momentum, angular momentum, energy and electric charge. So these are the quantities which satisfy conservation laws. एटा गोटे क्वेश्चन रे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रे पड़ी पारे, which are the quantities which satisfy conservation laws. Okay, so एमती पांचटा छटा ऑप्शन देथिबो कि चारटा ऑप्शन देथिबो, so सेई चारटा ऑप्शन भितरे गोटे एमिति क्वांटिटी देथिबो जोटा कि एक्चुअली कंजर्वेशन लॉ सैटिस्फाई करूनी, एंड तमर आंसर रे तमे सेटा को अप्लाई करियो पड़ियो. सो रिमेंबर दिस 5 quantities. Okay, 1 2 3 4 and 5, these 5 quantities they satisfy conservation law. That means energy can neither be created nor know it. Angular momentum, similarly linear momentum and mass cannot be created nor be destroyed. Okay, and mass, linear momentum, angular momentum, for any reaction the LHS is equal to RHS. Okay, reaction before and after the reaction is the mass or linear momentum remains same. Okay, so this is an important point. So again, we have already read about this electric field, what are the electric field and what is the formula for electric field, why it is a vector quantity. काहेकि ना गोटे गोटे निजस्व तार फील्ड रोची, गोटे बॉडी रो गोटे चार्ज पार्टिकल रो निजस्व फील्ड रोची, एंड जे कोनोसी डायरेक्शन रे जदि गोटे अन्य आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रे गोटे अन्य चार्ज से फील्ड रेंज भितर आसुची, so that gets attracted or repelled by this electric field. Okay, so it is the electric field, mane electric field of a point charge which attract or repel another charge. Okay, so whether or not any other charge that is zero present or not, the electric field for this body exists, and this is the formula. I have already said it. And the electric lines of force जो जिनस तार concept देइथिले माइकल फैराडे, जेमति लास्ट क्लास रे गुड कहितली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रो concept देइथिले मिलिकन. ओके, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट रो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हेतिला, एंड ए प्रॉब्लम आगुर हम देखि छे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन को So electric lines of force कहतिली the path along which a positive or negative test charge moves in an electric field. Okay, so तार sign convention होची positive charge ପାଇଁ electric lines of force radially outward ଯିବ straight lines, and negative charge ପାଇଁ towards charge ଆସିବ, and the tangent to the line of force gives the direction of resultant electric field. Okay, so the next point ei jo eta to dekhile. Okay, so এটা भी आगुरु देखिचे जे जदि गोटे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोटे पॉइंट रे क्लोजर अछि, दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मोर एज कंपेयर्ड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी. दैट मींस ए रे जदि अछि 40 नानो न्यूटन पर कूलम. ओके, then what is the magnitude of force on a proton at A? Okay, at B, sorry, what is the magnitude of force on a proton at B? तो सेठी कोन होई जो ना, इट इज 40 अछि, देन इट इज जस्ट हम जे देखिबा हाफ होई जो. ओके, क्योंकि आर सेपरेशन डबल होई छी आ भितरु ए पोजीशन रो बी से पोजीशन सेपरेशन डबल होई छी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रो. So that means strength is half. Okay, so these are some basic concepts of electric field, and we have already studied the electric field due to a dipole. Okay, so electric field due to a dipole mane kon, the two positive and negative charge separated by a distance, two equal and opposite charges separated by a distance d, jar ki dimension bahut choto. In real systems dimension is very less as compared to kintu figure dekhei chi tike kariki. Okay, and let us consider this is the center of the dipole. I mean to take electric field formula kon hobo, and let us consider at point P what is the electric field at point P we have to calculate. Okay, so r plus is the distance from the positive charge and the point P, and r minus is the distance from the negative charge from the point P. R plus, r minus. Okay, so electric field is equivalent to the principle of superposition. Kon कहला the electric field due to individual charges. Okay, electric field at a point P is equal to the electric field at this point due to individual charges. So
For the positive charge it is E plus, and the negative charge it is E minus. But why it is minus I have used here, because since the electric field direction for the negative charge, it is always towards the negative charge. Okay, so it at the toluku gala the negative y axis jauchi, so already we put direction property because it is a vector quantity. Okay, so already I made minus symbol nahi gale. Then we just put the formula kq by r square minus kq by r square. So kq z minus d by 2 whole square. Z is the distance from the midpoint to the point P, and kqz plus d by 2 whole square, and just play with the equation, and you will just find the formula for the electric field due to dipole, that is E vector. This is the formula. This is that is electric field due to dipole is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 to q d by zq, where z is the distance from the midpoint of the dipole to the point of reference where we are actually calculating the electric field. Okay, so q into d kon hojibo, q into d is nothing but electric dipole moment, that is a vector quantity, because this displacement is used in multiplication with the charge. Okay, one of the charges or anything. Okay, so it is a vector quantity, and electric field 2p by z cube. Okay, so 2p by z cube, that p is again a vector quantity, I've already said, and the direction of p, that is the dipole moment, is taken from negative to positive end of the dipole. Okay, so direction of dipole moment is taken from negative to positive end of the dipole. Okay, so I made dekile jehetu ki z divided by z cube achi. Okay, so if the distance of the point from the dipole is doubled, jodi denominator ta double hejibo, so 2 cube, that means 8. Okay, so the electric field at the point drops by 1 by 8 times. किंतु जदि पॉइंट चार्ज रो ये जो कोन डिस्टेंस डबल हे जिवो, पॉइंट चार्ज रो फार्मूला कोन थिला, E इक्वल टू k q by r square. Okay, so since पॉइंट चार्ज रो स्क्वायर रे अछि, so हमरो ये कोन हे जिवो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्रॉप्स by 1 by 4, 1 by 4 ड्रॉप हो पॉइंट चार्ज में, बट डाइपोल केस रे 1 by 8 टाइम्स ड्रॉप हे जिवो. ओके, दैट मींस कम जिवो. सो जेम देखिले पॉइंट चार्ज केते इलेक्ट्रिक फील्ड पकोउची, सेमती एबे देखिबा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अछि ड्यू टू व्हिच इज क्रिएटेड बाय सम चार्ज. ओके, एंड से चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर गोटे पॉइंट चार्ज एटी, सपोज एटी गोटे पॉजिटिव चार्ज एटी आसी गला गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर, ई फिगर देखो. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जदी राइट वर्ड जाउची, ओके, सो पॉइंट चार्ज जदी पॉजिटिव अछि तार साइन कन्वेंशन कहूची जे इलेक्ट्रिक माने एक तो फोर्स इज इक्वल टू QE, या ऊपर केते फोर्स पडिबो ए चार्ज ऊपर ना QE फोर्स पडिबो. ओके, एंड एटा मूव करिवो डेफिनेटली गोटे चार्ज ऊपर जदी फोर्स पडुची डेफिनेटली इट विल मूव. तो को पटे मूव करिवो, जदी इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जो पटे पॉजिटिव चार्ज जदी ता भितरे से इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे आसीला, तो सेटा सब बेले इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन रे मूव करिवो, साइन कन्वेंशन कहला. किंतु जदी नेगेटिव चार्ज एठी आसी जाई थांदा, तेबे ये तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे मूव कर थांदा. ओके, एंड एठी कोन देखो, पार्टिकल इज पॉजिटिव एंड हैज ऑपोजिट डायरेक्शन इफ q इज नेगेटिव. ओके, जदी इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन रे पॉजिटिव चार्ज मूव करिवो एंड हैज ऑपोजिट डायरेक्शन if q is negative. Okay, so these are sign. A dipole in an electric field, जेमति पॉइंट चार्ज गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर रखिले, सेमति गोटे डाइपोल को आनिबा गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर को. ओके, सो डाइपोल देखो, एटा गोटे नेगेटिव चार्ज, एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस. सपोज ए मानक भीतर डिस्टेंस होची एटी देखो d. ओके, सो तो माने ये जो कोन तम जो डाइपोल मूवमेंट, दैट इज q into d, मु कहितली ता आ पूर्व जो डाइपोल मूवमेंट इट जो हमें बाहर करथिले. सो द डाइपोल मूवमेंट कोन कहितली, द तार जो डायरेक्शन नेगेटिव रो पॉजिटिव डायरेक्शन जीवो, तार साइन कन्वेंशन. सपोज एटा होची डाइपोल मूवमेंट नेगेटिव रो पॉजिटिव. ए देखो ए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर, सो p वेक्टर रो डायरेक्शन देखो नेगेटिव रो पॉजिटिव जाउची. ओके, so the dipole moment makes an angle theta with the electric field. ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड एमती हॉरिजॉन्टली जाईची तांका मध्य रे डाइपोल मोमेंट ता थीटा एंगल रे अछि. ओके,
So this vector is in theta mane angle with the electric field which is horizontal. Okay, so electrostatic force acts on the charge end of the dipole, and because the electric field is uniform, those forces acts in opposite directions. Okay, ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ଟା ଏପଟକୁ ପଡିବ, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ଟା ଅଲ୍ଟରନେଟ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ପଡିବ. ଓକେ, ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ଶୁଭୁଛି? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ audible? Hello, Shriyasri, come on man. Okay, okay, okay. कोटा म्यूट अछि रे? संतोष महापात्र कोन कहूची म्यूट अछि? Okay. Okay, so now it hoची हमर force is equal to QE कहितले एटा एपट राइट साइड गला, एटा लेफ्ट साइड गला. So एटा गुटे इक्विलिब्रियम रे रहिला. So forces are equal in magnitude काइना दी जनकर चार्ज सेम and opposite in direction. So एटा गुटे इक्विलिब्रियम रे रहिला. किंतु हम जानि छे जो ए जो एंड पोजीशन रे माने कर ए जो चार्ज एंड रे एटा गुटे एपट डायरेक्शन रे मूव करूची लेफ्ट साइड रे नेगेटिव चार्ज पई, एंड पॉजिटिव चार्ज पई फोर्स ता राइट डायरेक्शन में जदि मूव करूची तो एठी कोन हबो, ये एपट को जेवा पई चेष्टा करिवो टुवर्ड्स अपवर्ड साइड, एंड ये गोटे टेंडेंसी डेवलप होची चार्ज एंड्स रे. ओके, ए जो डाइपोल जो एंड पॉइंट अछि, सो एंड पॉइंट रे गोटे माने कोन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जेते बेले गोटे बॉडी रे पड़े तो सेते गोटे टॉर्क जनरेट हुए, torque गोटे generate हुए. Okay, so that torque because since the field is uniform, the net force on the dipole from the field is zero. Okay, जो field पाई जो net force पड़ुची dipole ऊपर, that is zero definitely because it is equal and opposite, and the center of mass of the dipole doesn't move, माने ए center of mass move करिवनी. However, the forces on the charged ends produce in net torque, माने ये एपड को जीवा पई गोटे तार टेंडेंसी दे शो करिवो, एंड एटा तळु को आसिया पई गोटे टेंडेंसी शो करिवो. ओके, so net torque on the dipole about its center of mass. Okay, and the center of mass lies on the line connecting the charged ends. Okay, ए जो line connecting charge ends रे तमर center of mass रहिला. Okay, at the let it is at some distance x from one end, suppose a to eta जो distance होची suppose x, and obviously d minus x kind of total जदि distance d, then आरो जो center of mass रो जो आरो charge रो जो distance रहिबो, that is d minus x. Okay, from the other end. So tau रो formula कोन? Tau रो formula होची tau equal to r f sin phi. एटा हमें +2 फर्स्ट ईयर रे पढी थिले. ओके, सो किंतु एटा तो एबे पर्यंत हमें टॉर्क आडू जाइने सेपट साइड रे, किंतु एटा गोटे मन रखो टाउ इज इक्वल टू आर एफ sin थीटा किंबा sin phi, that is the distance between r and f. ओके, ए माने एंगल बिटवीन r and f. सो सेही जस्ट सेम फार्मूला एई हमर एई कांसेप्ट रे जदी हम पकेबा, एटी कोन होबो, एटी थीटा अछि, सो टाउ इज इक्वल टू fx sin थीटा. fx sin थीटा माने x, सपोज एटा होची तमर x distance. Okay, so f x sin theta plus f d minus x sin theta again. Okay,
So f तो fx sin theta plus fd sin theta minus fx sin theta. So last रे कौन रहेला ए जो fx sin theta कटि गेला. So finally कौन रहइबो fd sin theta. That is the force resultant force रो जो direction and d is the ए जो displacement मान जो भीतर जो distance sin theta. Okay. So force कौन and q into e, that is the formula for force. So f is equal to qe जदि हबो एठी पकाओ ta equal to f जगह रे qe d पड़ला sin theta. Okay, so q into d is again कौन, that is p vector, that is the माने कौन electrical movement. So that is the electric type moment. So q into e is in p. So e sin theta it is q into d is equal to p, electric dipole moment e equal to sin theta. Okay, p equal to qd, that is electric moment. Okay, এই জিনিসটা গোটা কাହାର ফর্মুলা ଆମେ କହିଥିଲି ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କଣ ତାର ଦୁଇଟି ଭେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଓକେ हेलो हेलो ଶୁଭୁଛି? ଆଜି ପୁରା ଗଲା କ୍ଲାସ ଟା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଶୁଭୁଛି? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ सर ଏବେ ଶୁଭୁଛି sir। ହଁ ହଁ ଶୁଭୁଛି sir। ବେଳେ ବେଳେ କଟି ଯାଉଛି, କଣ କରିବା? ସନ୍ତୋଷ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ସାର୍ ଆସୁନି। ଶୁଭା ଯାଉଛି? ଓକେ 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 ସୋ सर स्क्रीन भी ଆସୁନଥିଲା sir। ଏବେ ଆସିଲା ତ? ହଁ sir ଏବେ ଆସୁଛି। ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସୁଛି ତ? ଓକେ 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 yes sir। ओके सो एटा देखिलो जे आरएफ sin phi तापरे हमें एटा फार्मूला बाहर कले कोन कि tau is equal to माने torque is equal to pe sin theta, that can be written as the cross product of p vector cross electric field vector. Okay, जदि ए जो तमर जो डायरेक्शन जदि एंटी क्लॉकवाइज अछि ता माने जदि क्लॉकवाइज अछि ता माने नेगेटिव हो। एई जगह रे एई जो माने आमे जो डायग्राम करछे ए एंगल टी हबो एंटी क्लॉकवाइज। देखो एठू ए इलेक्ट्रिक फील्ड रु ए पटु एमथि जाईची एंगल टा, सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज।
पॉजिटिव किंतु जदि रिवर्स डायरेक्शन रे कि जाई थांदा ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन जदि माने नेगेटिव एक्स एक्सिस सेडू थांदा ता माने एटा क्लॉकवाइज थीटा आई थांदा सो क्लॉकवाइज थीटा रे हमरो कोन होई थांदा दैट इज पॉजिटिव हमें कहि पार थांदे ए सॉरी नेगेटिव कहि पार थांदे ओके सो द नेक्स्ट स्लाइड अगेन सर स्क्रीन Okay. आसुनी सो अच्छा रहो सर स्क्रीन आसुनी हाँ हाँ कर आसिला सर हाँ सर पछटा आसिला बुझेलान सर कटिगला बारंबार सर पछटा बुझेलानी ठीक है हाँ हाँ कोच से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो कोन कहले बुझेलानी से तापरे से जो हाँ क्लॉक जदि एंगल टा तमरो एंटी क्लॉकवाइज होउची ए जो टी sin जो है लेखिलो एटी ओके जदि तमरो थीटा टा एंटी क्लॉकवाइज अछि त माने पॉजिटिव होबो एंड जदि क्लॉकवाइज अछि हैं 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 किछि सुबाई जान सुबुन तो कोन करिया एता नेट कोन करिया मो प्रोब्लेम पड़ी এটা দেখা হଉଛି come on hello ଶୁଭୁଛି ଆରେ ରୀତିକା हेलो हेलो सर ଶୁଭୁଛି ଆଜି ପୁରା ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛି कनेक्शन सर टिके आपण वॉइस क्रैक होचे टिके अच्छा सुनो गोटे काम करिवा हमें एई जो क्लास टी आउथरे नबा ओके आज बंद करो काने पूरा टोटली माने कनेक्शन पूरा बहुत प्रॉब्लम अछि ओके सो ई क्लास टा आउथरे मु नेबी ओके सो आज इठी स्टॉप करो ओके